Yeah, so we're fucking live. पैस किया कभी ये पहनी थी मैंने वाइट पहन लिया आके. Fucking shit, isn't it? Fucking shit. भाई साहब ये you know what, let's keep that to a side. Let's keep that to a side. I am happy. मैं खुश हूं. मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यार. I am fucking delighted. यस आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड. ये हुआ एक चांटा पड़ा जब चांटे की जरूरत थी. वी एब्सोल्युटली नीडेड दिस स्लैप राइट इन आवर फकिंग फेसेस. वी एब्सोल्युटली डिजर्व दिस स्पैंक ऑफ अ स्लैप राइट इन आवर फेसेस. जो लोग बकवास कर रहे हैं, एंड आई एम सेइंग द वर्ड बकवास, बकवास वेरी 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 फकिंग सीरियसली. जो लोग बकवास कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस जरूरी नहीं होती, 3 पॉइंट्स इज व्हाट मैटर्स, लेट हिम सेटल बिलो, लेट हिम, चुप हो जाओ यार. Just shut the fuck up, bro. It has been 10 years of this automatic bullshit. Whenever we have any fucking excuse, चैंपियंस लीग था मिड वीक, नया मैनेजर आया है, नया प्लेयर आया है, अबे स्टेडियम है, अभी तो पोस्ट सर एलेक्स स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये नया प्लेयर है, अभी तो ये बड़ी टीम है, अभी तो ये इंजर्ड है. शट द फक अप गाइस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. योर प्लेइंग स्टाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट. थ्री पॉइंट्स इज व्हाट मैटर्स. दिस इज व्हाट फकिंग हैपेंस. You don't get away with that shit every fucking time. We deserve to be spanked. And I say the word spanked. 6-0 today. Exaggeration हो, कुछ बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. They fucking hit the post twice. Twice in 10 seconds. They had piss poor. And I'll say piss poor. Yes, we did as well, but fuck us. Piss poor finishing in the first 30 minutes, 35 minutes. They should have been up. We should have been as well, but we have been crying out, striker nahi hai, ye nahi hai, wo nahi hai. Well, we have a person who scored 30 goals leading the line. So you may call it कि उसे left पे खेलना है, right पे खेलना है. Let's not fucking make excuses for fuck's sake every time. We're out of breath. Casemiro की बात, oh ये मत वो Casemiro, what Casemiro this, bro? He's not prone to criticism, is he? That's our fucking problem. भगवान बना रखा है सबको. Casemiro is looking like an aunt who's 80 years old and बेंचो कल लुढ़कने वाली है वो. He can't do one thing for fuck's sake. मतलब he's going into tackles. If you know you're out of form, shut the fuck up. I don't know what Ten Hag is seeing throughout the week. क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब वो पूरे वीक में एकदम लाइटनिंग फ्लैश होता है और वो एक बड़ा छोले भटूरे का प्लेट खा लेता है मैच से पहले, and he can't fucking move. Because if you can see Casemiro can't move, you sure as hell don't start Mount and Bruno with him. You fucking put McTominay because तुमने 35 मिलियन 30 मिलियन तो लिए नहीं. जब बेंचो 45 मिलियन मांग रहे हो उसके तो यूज करो उसे. जब 50 मिलियन मांग रहे हो तो 50 मिलियन 5 पैसे का यूज करो उसे मिडफील्ड में डालो. जब इतनी बकवास मिडफील्ड तुम्हें नजर आ रही है, when you're absolutely being fucked left, right and center. वुल्व्स की मिडफील्ड से मैंने प्रीव्यू में चिल्ला चिल्ला के बोला था, वुल्व्स की मिडफील्ड से ये रूबिन नेवेस और जोआओ मोटिन्यो चले गए. जोआओ मोटिन्यो, लियांडो डेंडोंकर और रूबिन नेवेस चले गए. सो देयर मिडफील्ड वाज हॉलोड, एम्प्टीड. उसके बावजूद दे एब्सोल्युटली रम्ब रोल्ड अस, खत्म कर दिया हमें. एंड यू स्टिल कांट रियलाइज द फैक्ट कि यू नो व्हाट यू आर पिकिंग. मुझे बता दो, इट्स आई हैव बीन सेइंग इट लास्ट सीजन, मुझे नेगेटिव बोला गया अबाउट दिस. लास्ट सीजन की 50% ऑफ आवर विक्ट्रीज, इस सीजन के 2 गेम्स. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Oli era and the style of football that we are playing. मैं बोल नहीं रहा कि मुझे finished product चाहिए. All I'm saying is, you tell me one difference. You tell me one difference. DDG this, DDG that, DDG this, DDG that. I'll take up the live chat as well. But yeah, just finishing this. DDG this. कुछ करेगा उनाना, कुछ नहीं कर पाएगा. मेरी तो और फटती है जब वो सेव नहीं कर पाता. वो कुछ नहीं करेगा अकेला. He'll not fucking do anything alone. He's not able to do anything alone. He passes it to Van Bissaka. Van Bissaka, भैया कहाँ डालूं? भैया कहाँ डालूं? He can't fucking do anything alone. He can't. Because it's not about one player. एक टाइम था, अभी 4-4 खेल रहे हैं. अरे क्या कर रहे हो यार? Just because it's not fucking गली क्रिकेट, गली फुटबॉल नहीं है तुम्हारा कि 4 लोग खड़े हैं, मुझे पास देने वाला 1 इंसान है, पास देने वाले 2 इंसान है, आगे 4 खड़े कि मेरे को पास दे. स्पर्स ने बैक 6 कर लिया है, तुम उनके आगे 4 खड़े हो और यहाँ पे 2 पास देने वाले खड़े हैं. What the fuck are you doing? लीचा मार्टिनेज ऊपर, and Bruno, भोसड़ी Bruno भाई. Bruno is, you know what? He's my favorite player. I've been saying this for the past, since this season has started. But fuck off to that attitude, man. What is this attitude? You are not, Jack, and this is not Titanic or Rose. तुम्हें नहीं बचाना सिर्फ हमें. We have 10 other players playing
They can save Manchester United as well. हर बार तुझे हीरो हीरा लाल बनने की जरूरत नहीं है. He's on the fucking halfway line. He's pinging up balls and pinging up shit balls. इसका FIFA काट लो, 25 की long passing ना हो इसकी जैसी आज थी. You want to hit a long pass, you hit it once every 5, 6, 10 minutes and you make sure that it better be on target. Man, जो 10 बार तो इसकी passing से turnover हो गया. And it's not about the fact that we have lost right now, we've lost this. मैं पागल हो रहा हूं, मैं नेगेटिव, ब्ला 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 ब्ला. इट्स अबाउट द फकिंग फैक्ट कि ये बंदा हमेशा करता है. नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा. बैक पास कर ब्रो. डोंट फकिंग शूट. Don't fucking shoot. You have been here for 4.5 years and you have scored 5, maximum 5 long rangers. एक साल में एक निकलता है तेरा और तू 40 शूटे लेता है उसकी वजह से. We can do without that one goal. We certainly can. I'm not telling you to not shoot at all because that's a part of your game and that is what makes you my favorite. But fuck off to that attitude. भाड़ में जाए वो एटीट्यूड कि मुझे ही हीरो हीरा लाल बनना है, अपन ही बचाएगा. अपन नहीं तो कुछ नहीं, अपन नहीं तो कुछ नहीं. I mean, I don't get that, do I? Casemiro, absolutely कुशाग्र भाई, absolutely live it. It's not about the fact Casemiro आ जाएगा यार, 31-32 साल का है, वो हम गांडू हैं. That we have paid 80 million for him. So now it's not the fact that he won't deliver. He will because that is the ilk of player he is. Excuse me. But the fact that हमने 80 million खर्चे हैं and we fucking think कि हमने 7 जन्मों के पाप धो लिए हैं अपने CDM एक खरीद के जो 31-32 साल का है and now we don't need to buy any fucking one. It's not about him. It's about the board. It's about the manager because the Sophie and Amrabats of this world and people saying Ten Hag को दो, Ten Hag को जो चाहिए. उसका हॉयलुंड था, उसे पता था इंजर्ड है. He was going he was going into the season with Højlund knowing कि उसे stress fracture है whatever and we have fucking overpaid for every one of his acquisitions. Don't come here and tell me कि उसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला. We have had much worse transfer windows than this one. Much, and I'm saying much more. So what I'm really livid with the fact is कि जब ये पूरे हफ्ते या तो you come on my face and tell me कि ये पिछले 5 दिन से एकदम कैसमीरो लेवल खेल रहा है, जैसी मैच डे आता है एक छोले भटूरे की प्लेट खा के ये सुस्त हो जाता है, हमसे ना खेला जा रहा भाई. This is not how it's done. When you can see इस पे जंग लगा हुआ है, ऐसे दिल्ली के एसिड रेन में इस स्टील के पुर्जे को रखा हुआ है, इसमें it can't move like this for a centimeter for fuck's sake. इतना जंग लगा हुआ है. ये ऐसे बॉल आ रही होती है, ऐसे टैकल मारता है. You can see throughout the training, the team, the staff, मिचेल वैंडेकर जो भी है वो, स्टीव मैक्लेरन, बुड्ढे भाई साहब अंग्रेजी फुटबॉल के, देन देयर इज आवर हाइजन. यू कैन सी यू फकिंग 50 मिलियन मांगे ना मैकटोमिने के, यू गो फकिंग यूज हिम फॉर 5 पैसा फॉर फक सेक. यू गो एंड यूज हिम. नहीं, उसको यूज नहीं करना बिकॉज हमारी तो चौड़ है, हमने तो माउंट खरीदा है. इजंट दिस ऑल शिट कि मैंने मैग्वायर खरीदा, मैंने 80 मिलियन दिए तो अब इसको खिलाना पड़ेगा. I'm not saying कि माउंट की गलती है, but it doesn't make sense tactically. तुमने एरिक्सन लाया, that doesn't do fuck all भाई, that doesn't solve shit. That doesn't solve shit at all because it doesn't address the. मतलब ऐसा लग रहा था यार कि मैं फीफा की गेम देख रहा हूं. स्पेस होल्स, पैंचों ओवर यूज चट्टी लग रही थी भाई हमारी मिडफील्ड. इट वाज फुल ऑफ होल्स. इट वाज फकिंग फुल ऑफ बिग होल्स एंड इट्स सो इरिटेटिंग एज अ फैन. एक तो हमारे साले रात को मैच करवाते हैं. Obviously this was still a comfortable time than पिछले वन, but मेरे को अगर यही टट्टी खेलना है तुम्हें 8-9 बजे डन कर दो यार, डन कर दो. मैं दूसरे मैच तो एक अच्छी कॉन्फिडेंस और एक अच्छे दिमाग से देख पाऊंगा. I wanted to see an exciting game between Newcastle and Man City क्योंकि मुझे पता है वो टीम ये बकचोदी नहीं करेगी. उन दोनों टीम्स का कभी ये नहीं होता, ओ नया सीजन है, ओ नए प्लेयर्स है, लेट योस्को गॉर्डियोल सेटल इन, लेट टीनो लिवरमेंटो सेटल इन, लेट हार्वी बॉर्न सेटल इन, लेट एडी हाउ हैव हिज टाइम, लेट हिम हैव हिज प्लेयर्स, लेट देम प्ले इट. नो, दिस ओनली हमारा भी नहीं हुआ करता था सर एलेक्स के टाइम तक. बट अब हमें अब जो फैंस डिमांड करे कि भाई रिजल्ट से क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या थी, वो लोग नेगेटिव है. बिकॉज calm your tits down fans. It's the 3. Someone said 3 points is better than 1 point, better than 0 point, and 3 points is all that matters. Well, this is when it fucking matters because with a performance like this, अगर आपको चाटा पड़ता है ना वहीं, तो जब आप देखते हो अपनी फटी हुई दिखता है आपको पॉइंट्स टेबल पे बिग fucking 0 in the first game, that is when you think, oh, we really fucked up. Aaron Van Bissaka का इंटरव्यू आया था wherein he said we didn't play, it was not an ideal start, but hey, we got 3 points. Fuck off, bro. Fuck off.
Robbery and all apart, we were piss poor. 0 पॉइंट्स होने चाहिए थे भाई अभी, एब्सोल्युटली जीरो. पीपल थिंकिंग कि पिछले साल के हमें जो दो गेम्स थे, दे कॉस्ट अस द टॉप मे बी टू, और वी कुड हैव, नो, दे एक्चुअली पुट अस इन दैट पोजीशन, बिकॉज हम पिछले सीजन भी इसी टट्टी की चौड़ में गए थे कि हम तो ये, हम तो वो, जब दो चांटे पड़ गए पहले दो गेम्स में, अकल ठिकाने आई. वी सॉर्टेड आवर वेज आउट कि ज्यादा जितने बड़े हैं ना, उससे बड़ा नहीं समझना खुद को. रैशफोर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज अप विद हिम. एक पिछले सीजन उसमें इंप्रूवमेंट आई थी कि वो इधर उधर देखने लगा था, भेड़िया जैसा, एकदम घोड़े जैसा सीधा नहीं देख रहा था. आई थिंक 30 गोल्स उसकी पे चढ़ गए हैं. He has again fucking lost it. You know, it's not about the perform. I don't care. He might as well score 50 goals and even people going, oh, he was digging on Rashford. It's not about that. It was about the fact कि भाई 7वां सीजन है यार तेरा. Why can't you pass and move? Pass and move. Pass and move का मतलब इन्हें समझ आता है कि 1-2. No, just pass. Just pass. Just look at City. Just look at Liverpool. Not every pass is meant to be an assist or a pre-assist or meant to dissect oppositions. Some chess खेलो, chess देखो. तुम हर एक मूव से रानी नहीं काटने जाते. You eventually build up and then Bruno, हीरो हीरा लाल, ब्रूनो, बैंक ब्रूनो, हीरो हीरा लाल, मुझे ही बनना है हीरो. आई एम दी ओनली सेवियर, बिकॉज मैं हूं सर एलेक्स के बाद की सबसे बड़ी साइनिंग. सो आई एम दी ओनली सेवियर. हाफ लाइन पे हो, एब्सोल्युटली मैं तो चप्पड़ फाड़ के साथ समंदर पार बॉल पहुंचाऊंगा, बिकॉज दैट इज माई, यू नो, मैं ही बचा सकता हूं यूनाइटेड को. बाकी 10 प्लेयर तो ठेला बेचना है अपना, सिर्फ मैं कर सकता हूं. 86 मिनट्स हो रहे हैं. पता है प्रीमियर लीग का नया रूल है, इतनी चोदी हुई है, इतने लोग गिरे हैं, 2 गोल हुए हैं, सेलिब्रेशन हुई है, 10 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 5 यहाँ के 5 यहाँ के. टाइम 6-7-8 मिनट तो पक्का मिलना है. 86 मिनट है, मैथ लगा लो गवारो, दैट इज एटलीस्ट 12 मिनट्स ऑफ प्ले. बट नहीं, हीरो हीरा लाल ब्रूनो हाफ पिच से जब उससे एक चीज सही नहीं हुई पूरे दिन में, एकदम ऐसे वो जो ऐसे शूट को नीचे प्रेस करते हैं ना, जिससे प्लेस होता है, जो फीफा 14 जो हम फोन पे खेलते थे, जो बहुत स्लो जाती है बट प्लेस होता है, वो शॉट मार रहा है आधी पिच से मार रहा है, जब उससे एक ढंग का पास नहीं गया पूरे उसमें. But he's going to do that all of a sudden now. This was expected. It was, and I'm happy. I am angry, but I'm happy this has happened. I'm happy. One, this will wake the shit out of our board. Number two, this will wake the shit out of our taklu. Number three, and the most important, in गधों को Coca-Cola Carabao Cup जीत के जो इन्हें लग रहा है ना, you know, that's the fucking problem with our neighbors. इनको शर्म नहीं आ रही है कि we are against a team. We are the rivals of a team who are the defending treble champions. They have gone on and added another trophy which wasn't present in their cabinet, which is the Super Cup. But क्योंकि हमारे neighbors ही इतने झाटू है, इतने घटिया हैं कि उनका मैनेजर अभी भी जाके बोल रहा है कि प्लीज स्टेडियम भर देना, even after they're defending a treble. सो हमें वो चोट लग ही नहीं रही है. इट्स लाइक दैट इज ऑलरेडी स्टिच्ड अप एंड मूव ऑन. तो इन गधों को लग नहीं रहा है कि व्हाट बुलशिट हैव दे डन लास्ट सीजन, कि कैराबाओ कोका कोला कप जीत के जो इन्हें लग रहा है ना कि हमने क्वाड्रुपल बचा लिया, कि हमने तो बहुत बड़ी चीज कर ली है, won that one trophy. किसी को बस एक इंटरव्यू दिलवा दो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अबे घंटा डिजर्व. You deserve only what you are capable of in the right fucking moment, man. In the right fucking moment. In the right fucking moment. You don't deserve shit, bro. You don't deserve absolute shit. Since the start of the... Bro, random, even in the first half, Ray. Even in the first fucking half. What the fuck did we do in the first half? हमने chances बनाए. You know what? Chances बनाए doesn't win you football games. What wins you is fucking scoring them. And then अगर ऐसा होता कि हम first half में जाते, oh, we were unlucky, we made a lot of chances, but we fucking conceded many as well. So fuck those chances, because Ange Postecoglou खेल रहा है. The least you'll do is fucking create chances against a team that has been under a new manager for 2 games. Preseason, yeah, preseason. अबे क्या preseason? We didn't have one distinct style of play in the preseason. एक गेम में नहीं मुझे दिखा कि ये तरीका है, इस तरीके से हम खेलना चाह रहे हैं. I'm not even saying the finished end product. खेलना चाह रहे हैं. Oh no, क्या अब कुछ नहीं होगा. Nothing will happen with Onana, because it doesn't. Football doesn't work like that. Football just doesn't. I am seeing Onana.
ओनाना ने एक किकबैक किया जो डहेया अपने 7 जन्मों में नहीं कर सकता था, जो उसने ऐसे बॉल को मारा और एकदम गया, और वैन बिसाका ने क्या किया, हेडर मारा, अले भैया बॉल चली गई। यू नो इट मेरा क्या जा रहा है भाई, डहेया बॉल लूज करे गोलकीपिंग में या वैन बिसाका वहां बॉल लूज करे, इफ इट हैज टू गो फॉर अ थ्रो इन, we don't fucking care who loses it, do we? So like ball to hamari ja rahi hai, so that isn't gonna improve. We yet again, trust me, लिख के ले लो मुझसे, it's not about winning or losing, we yet again are treading on this path of short termism yet again. AWB चाहे 10 मैन ऑफ द मैच जीत ले, he could be my favorite player, but does he have the inherent capability, does he have the inherent strength and the skill set to play out from the back wala football? Does he have it, does he not? I don't know, I don't think so. पिछले 2 साल से मिडफील्ड एंड अटैक सॉर्ट हो रहा है भाई, पिछले 10 साल से पूरा क्लब सॉर्ट हो रहा है, पिछले 20 साल से हो रहा है, 10 साल से पट्टी लगी थी सर एलेक्स नाम की। So that is that. I mean, attack, defense, कभी defense नहीं होता, जब defense और वो होता है तब striker नहीं होता। It's been going on, bro. Just don't forget, बकवास कर लो जितने पैसे, हमने 10 गुना ज्यादा पैसे खर्चे हैं, और वो जब अपने प्लेयर बेचते हैं ना, वो आधी वैल्यू पे बेचते हैं, वो बकचोद प्लेयर्स के 45 मिलियन नहीं मांगते हमारी तरह मैकटोमिने के, और फिर उन्हें खिलाएंगे भी नहीं। जब there would be a couple of situations in the history of football जहां मैकटोमिने जैसे प्लेयर की जरूरत होगी, and last game, या चलो लास्ट गेम से सीख ले ली, ट्रेनिंग में देख लिया कैसेमीरो में ऐसे जंग लगा हुआ है, Fe2SO3, यस ये था जंग का फॉर्मूला है, Fe2O3, जो भी जंग लगा हुआ है उस आयरन में, ऑक्सीडाइज पड़ा है, ऐसी जंग पड़ी है मशीन, ना 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 ना, वाह 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 वाह, मतलब व्हाट द फक आर यू थिंकिंग व्हेन मैकटोमिने इज रिक्वायर्ड? किस बात के 45 मांग रहे हो मेरी जान, किस बात के 45 मांग रहे हो? इफ यू कांट फकिंग ट्रस्ट हिम टू एक्चुअली डू द जॉब वंस यू थिंक इज कुड बी सूटेबल फॉर हिम। टाइटैनिक मूवीज भाई बोल रहा हूं एंड जैक ही था ना, जैक और रोज यही थे ना, जैक हमारा पता है ब्रूनो फर्नांडिस है, बिकॉज पूरी टाइटैनिक में जो 6,500 लोग हैं, जैसे पूरे यूनाइटेड क्लब में जितने भी लोग हैं, उनका एक ही सेवियर है, ब्रूनो। और पता है कैसे सेव करेगा वो? लॉन्ग पासेस डाल के एक एंड से दूसरे एंड तक, ओनाना से लेगा बॉल दे और वहां पे रैशफोर्ड को पिक आउट करेगा, और 145 में से एक बार कोई टीम जो बहुत हाई लाइन खेल रही होगी उसको हम कैच आउट करेंगे और कहेंगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एट इट्स बेस्ट, ब्रूनो द असिस्टर। हम when we pass, no, that's our thing. See, हमें आते हैं 2 तरीके के पास, एक डेड पास, ठीक है, डेड पास, उसे मैं कहता हूं MHF, मरी हुई फुटबॉल का पास, MHF, मरी हुई फुटबॉल का पास। क्या लीचा, क्या करूं, 20 सेकंड बॉल पे ऐसे करेगा, वरान को देगा, क्या करूं, राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, अपनी बॉडी शेप ऐसे स्लाइम की तरह हक के, एंड एरन वैन बिसागा तो वैसे ही बॉलोफोबिया है उसको, तो पीछे दे दूंगा, ही इज बेटर ऑन द बॉल ब्रो, ही इज बेटर ऑन द बॉल। एक इंसान है जिसकी सीलिंग ही 50% है, वो 51 भी नहीं जा सकता अपनी जिंदगी में, तो वो बेस्ट ऑन द बॉल भी हो जाए, वो 50.5 जाएगा 100 की रेटिंग में से, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने अपनी जिंदगी भर नहीं किया है कभी बॉल से, पता नहीं कैसा ही विंगर था वो क्रिस्टल पैलेस की एकेडमी में, ही नहीं करेगा। मैं भी यही हूं, पूरे सीजन यही आऊंगा, स्ट्रीम करूंगा, मुझे चांटे मार देना रियल लाइफ में आके या चैट में आके गाली दे देना, अगर इस पूरे सीजन इंप्रूव नहीं, कह रहा हूं मैं, बकवास नहीं जो हम फैंस को खिलाई जाती है पिलाई जाती है, इवन आई फॉल प्रे टू इट, इंप्रूव हो रहा है ट्रेंट का 60-50% की। एक दिन ऐसा आएगा जब बॉल होगी यहाँ पे और लोग डरने लगेंगे आयरन वैन बिसाका से कि ये क्रॉस ना डाल दे, ये वाला क्रॉस नहीं जो मतलब मेरा छोटा भाई भी डाल देगा जो अभी मुश्किल से 5th में आ रहा है, कि ऐसे टपक रही है बॉल और ये करना है, ये लपकना है और फिर अटैक आपको एक टैप एंड हेडर मिल रहा है, ये वाला क्रॉस नहीं कि एज ऑफ द बॉक्स हो, एक ऐसे ले विदाउट बैकलिफ्ट एक क्रॉस डाल दे। अगर ये हो जाए इस सीजन, अगर ये ऐसे 3 क्रॉस डाल दे इस सीजन, मुझे जिस मर्जी की गाली देनी है चैट में आके देना, अगर घर आ जाना चांटे दे। दिस वोंट हैपन। जो डालो ने किया आके, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, शॉर्ट टर्मिज्म पे मत जाओ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। डालो ने जो किया एरन वैन बिसाका अपने 20 जन्मों में नहीं कर सकता, 7 जन्म इंटू 3 21 30 3 बार वो 7 जन्म ले लो, वो नहीं कर सकता। स्टेप ओवर नहीं आते भाई, नहीं होगा उससे। जो उसने आगे गया, उसने मैन बीट किया, उसने शोल्डर दिया, नहीं कर सकता वो ऐसी आई विश आई कुड हैव शोन यू माय फीट, ऐसी ग्लिची एक प्लेयर काट सकता है फिर वापस पीछे, वो यही कर सकता है, ही कांट डू शिट देन दैट। एंड कभी जिस गेम में वही रिक्वायर्ड होगा, मैन ऑफ द मैच, और जिस गेम में एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द गेम्स होंगे
जिसमें हमें एक्चुअली एक बंदा चाहिए होगा जो क्रॉस कर सके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई. Rashford will flops this season, new contract and पता नहीं भाई. मैं फ्लॉप तक नहीं जा रहा हूं, बट फ्लॉप और व्हाट, इवन इन लास्ट सीजन थोड़ा सा मुझे इंप्रूवमेंट दिखा था. मैं 30 गोल की तरफ जा ही नहीं रहा. ऑल आई केयर इज सर उठा के जी भाई, सर उठा के जी, सर थोड़ा देख देख. You don't always have to just pass and then 1-2. You don't have to do that, or you don't have to take no backlift and सीधा शॉ को दे दो, पूरा डिफेंस कट जाए. You can make a simple pass, मेरी जान. You can just go and pass and move, pass and move, and don't move towards the goal. Pass and take space, pass and take space. Don't pass and भागो या pass to एकदम assist. You can do that. And Bruno, you don't always have to take all the assists in the world. When you see Christian Eriksen को क्यों लेके आया जा रहा है, Christian Eriksen को लेके आया जा रहा है to fucking sort that shit out. Simple pass खेल, तू यहाँ खेल, तू यहाँ स्पेस में जा. But no, Christian Eriksen यहाँ मांग रहा है राजा राजा ब्रूनो राजा. नहीं, बूम बूम, हीरो हीरालाल ब्रूनो, और एकदम सीधा कुलुसेव्स्की की छाती पे, और एकदम सीधा पेद्रो पोरो की छाती पे. उनाना मेरे को दे, उनाना सीधा पेद्रो पोरो के पास. That's not how shit works, bro. And it's not even about कि उसने गलत किया. I don't care उसने सही भी किया हो. You shouldn't do that 10 times a game by when you're losing 2-0. 86th minute है. You have been shitting the whole game. और तू जबरदस्ती शॉट. It's not even कि रोलिंग आ रही है, it's meant for you, स्पेस दी थी, नहीं, जस्ट ऐसे प्लेस कर रहा है बंदा 50 की पावर से, आधी पिच से. कम ऑन मैन, कम ऑन. ऑल्टरनेट सीजन सिंड्रोम, ए भी भाई स्पॉट ऑन भाई. मैं तंग आ गया हूं यार, तंग आ गया हूं, मतलब तंग आ गया हूं. कुशाग्र ने रॉय कीन का ब्रिंग ऑन एंथनी मार्शियल, यू माइट एज वेल. अब बताओ. दिस इज आवर लेजेंड, दिस इज वन ऑफ आवर क्या probably our greatest ever captain saying this on live television about probably our only striker which is there. People, we have excuses. यहाँ अगर एक बोरी इतनी है ना, excuses हमने यहाँ तक भर रखे हैं भाई, यहाँ तक भर रखे हैं excuses, because we are filled up with excuses भाई. कोई मतलब ही नहीं है यार कि compatibility प्लेयर्स की क्या होती है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स. हम उड़ जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इज घंटा बैक भाई. व्हाट, किस लिए होता है फिर प्री सीजन? अगर सीजन में आके भी तुम्हें 5 गेम चाहिए, किस लिए है प्री सीजन? मैनचेस्टर सिटी, दे वॉन द सुपर कप, दे लॉस्ट अगेंस्ट आर्सेनल, एंड दे वॉन अगेंस्ट, आई डोंट रिमेंबर, क्रिस्टल पैलेस, पता नहीं कौन, नॉटिंघम, जो भी टीम थी वो. They lost against Arsenal. No worries. They won against Sevilla. They barely won. But you know what the fuck they did? They played their football. They had their tweaks. Opta का मैंने एक वीडियो देखा. Sorry, Opta नहीं. मैंने T4 Football, which is athletic का वीडियो देखा. वो अब लॉन्ग बॉल्स यूज कर रहे हैं. याद है FA कप फाइनल, गुंडोगन को लॉन्ग बॉल दी थी, हालैंड को दी थी, जो गुंडोगन के पास आई थी. They are doing more of that. That is the tweak. But they have a specified system which they are adhering to. Now I get it. कुछ ट्वीट्स बोलेंगे कि वो ग्वार्डियोला है, उसने पैसे खर्चे, उसे 6 साल हुए हैं, वो ट्रेबल विनर्स है, उसका ये है, उसका वो है, क्लॉप ये है, आर्टेटा को भी 3 साल. आई गेट दैट. बट मुझे कुछ स्टाइल दिखे, कोई एक जेंटलमैन चैट में बाद में देखे, कोई एक जो समझता हो कि वो फुटबॉल बहुत एक चरम सीमा के लेवल पे देखता है. मतलब अगर 2 प्लेयर्स एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो उसे तीसरा पीछे से दिखाई दे जाए भागता हुआ, ग्वार्डियोला लेवल पे देखता है फुटबॉल. कोई मुझे समझा देगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. कोई मुझे, because see, I am a firm believer there are just not 2 styles of football, like Guardiola, like Mourinho, जो हम categorize करते हैं attacking और defensive और ये वो. There are multitude of layers between attacking football और ये सब. I get that. पानी पी रहा हूँ chat यार. I get that. But कोई मुझे समझा सकता है what are we trying to build? If I get an explanation that this is what we are trying to build, मेरा दिल शांत हो जाएगा थोड़ा. Because I couldn't see it last season. Well, fair enough, first season है. I couldn't see it in the pre-season. Well, fair enough, pre-season है. हम अच्छे से up to नहीं है अभी. Well, now I didn't see in the first game. Oh, first game में 3 points is what matters. All right, 3 points मिल गए. Now we go to an open. Trust me, guys. Trust me, there isn't a better time. There isn't a better time to play Spurs at their home. And Postecoglou की टीम इन्नी खुली है मिडफील्ड में. तो हम भी उनके बाप है, हम इन्ने खुले हैं. And we are supposed to be the developed ones. वो इन्ने खुले हैं, हम इन्ने खुले हैं. Because
That is Manchester United for you. That is Manchester United for you, having that. Our mid is so open. It is Prakash bhai. It is, and everyone's saying Amit, AV bhai, Vishal bhai, Random bhai, Bakul. Everyone knows our midfield. What I really can't get my head around is Garnacho. Opinion on Sancho today? Okay, let me come first to him. Bakul bhai, Sancho, Bundesliga की मार दूंगा मैं. I'll kill Bundesliga for fuck's sake. I'll kill Bundesliga. मैं हैरी केन का कल पहला मैच देख रहा था. I watched it live at the moment he scored. वो तो ऐसे हो गया होगा. ऐसे. भाई इतनी जगह नहीं मिलती प्रीमियर लीग में तो. वहां तो तुम वर्डर ब्रेमेन हो. मतलब वो वाला कोट नहीं है घटे वो फटे तो फटे नवाबी ना घटे. वो वाला सीन है बुंडेसलीगा में. वर्डर ब्रेमेन हो, यूनियन बर्लिन हो, तुम्हारी फ्राइबर्ग हो, तुम्हारी शाल्के हो, तुम्हारी आई डोंट डुसेल्डोर्फ फॉर्तुना हो, तुम्हारी कोई भी टीम हो, वो खेलेगी हाफ लाइन पे. तो सैंचो के जो हमने एक से ज्यादा वो ट्रिक्स देखी थी यार गेम में, 10-10 20-20 ट्रिक्स करता है, वो तब थी व्हेन डिफेंडर्स वर चार्जिंग हिम कि आजा आजा सैंचो हम तेरे से बॉल छीनेंगे, एंड ही यूज्ड टू जस्ट फेंट द शिट आउट ऑफ हिम. यहां के डिफेंडर कहते हैं कर ले. आया 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 आया. मेरे साथ जॉनी एवेंस खड़ा है, मेरे साथ यहाँ हैरी मैग्वायर खड़ा है, उसके पीछे रॉबर्ट हुथ खड़ा है, उसके पीछे वेस मॉर्गन खड़ा है, उसके पीछे फिर दो यंग डिफेंडर जॉन स्टोन और जोस्को गॉर्डियाल खरीदे. आया 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 काट ले. किसको काटेगा? और जब काटता है, काट भी लेता है तो धैर्य धक्का. क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा है क्योंकि कोई तो बल्क अप करेगा नहीं, कोई फिजिकलिटी का तो सीन ही नहीं है. गर्नाचो भी एकदम स्टार बॉय है, ठीक है, बच्चा डेवलप हो रहा है. मत खेलना भाई, फिर मत स्टार्ट कराओ ना. फिर उसे अगर स्टार्ट करके भी बहाने देने हैं तो स्टार्ट मत कराओ. बिकॉज यू नो व्हाट, अभी बहुत कोट देख के तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. एरिक टेन हाग रिसेंटली विजिटेड द अंडर 21 और द अंडर 19 गेम जहां पे यूनाइटेड हारी, और उसने बोला कि क्यों हारे, और यूनाइटेड टीम ने बोला क्योंकि ये हमसे बड़े थे, और टेन हाग ने बोला वेल इट्स नॉट अबाउट बीइंग एट द राइट एज, इट्स अबाउट हैविंग द राइट क्वालिटी. देन ये कोट पे तो सबने तालियां बजाई. फिर गार्नाचो के वक्त व्हेन इट्स नॉट अबाउट द एज, यू कांट एक्सक्यूज हिम फॉर हिज फिजिकलिटी, बिकॉज़ उसका फर्स्ट प्रॉपर सीजन था. ऑब्वियसली उसने बल किया होगा, व्हाटएवर दिस एंड दैट, but then नहीं मत कराओ स्टार्ट. You either blame Ten Hag for it, you either blame Garnacho for it, you either blame the club for it. मैं तो blame करूंगा because I'm not here to take excuses about anything and everything. हालैंड ने भी तो 140 गोल मारे ना पिछले सीजन, उसको तो जंग नहीं लगा, उसको तो कुछ नहीं हुआ. एंड रैशफोर्ड, मैं तो गोल मांग ही नहीं रहा मेरी जान तुझसे, मैं तो ये कह रहा हूं उठ उठ, अपने वो घोड़े के अस्तबल से निकल. ये जो तूने लगा रखा है यही दिखेगा तेरे को. 4 बंदे हैं सामने, मतलब स्ट्रीट फुटबॉल चल रहा है यार, स्ट्रीट फुटबॉल चल रहा है. डू अ पाना विन $100, डू अ पाना विन £100, डू अ पाना दिस दैट. अरे सऊदी जाओ ना भाऊ, सऊदी जाओ, 150 लाओ इधर, सऊदी जाओ 150 लाओ इधर भाई. बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर फन, वी आर हियर फॉर विनिंग गेम्स. नहीं ना, 4 लोग दिख रहे हैं ना, ओके, लुक अप. आई एम श्योर अगर एक जगह पे 4 लोग हैं, कहीं पे स्पेस होगा, कहीं पे स्पेस होगा. डजंट टेक अ पेप गार्डियोला टू फिक्स दैट कि यहां पे अगर 4 लोग हैं, यहां पर अगर भीड़ है तो कहीं तो लोग होंगे. यू पिक अप, यू पास दैट, एंड इट्स अगेन नॉट अ न्यू प्रॉब्लम. I am getting frustrated because this has been happening over the past 5 seasons and I don't get it. ऐसी कौन सा तेरे को यूडेमी का, कोर्सेरा का, कौन से उसका कोर्स करवाएं, कौन सा तेरे को मैनेजर चाहिए, तेरे को बाप वाला, वो बाप के रूप में माँ वाला प्यार भी मिल गया थ्रू ओले गुनार सोल्शायर, तेरे को एक फिजिक्स टीचर भी मिल गया राल्फ रैगनिक में, तेरे को एकदम ताऊ टाइप मुरीनियो भी मिल गया, अब तेरे को एक कूल चाचा भी मिल गया टेन हाग में, जिसको सब आता है, कूल मामा कूल चाचा. अब तेरे को क्या चाहिए? तू कब ये सीखेगा? तू 30 गोल मार ले, तू 35 मार ले, तू रूनी लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ दे, बट तू रूनी जैसा एक पास करके दिखा दे, तू रूनी जैसी स्पेशल और गेम अवेयरनेस दिखा दे, तू बर्बेटॉफ जैसा एक टच दिखा दे, जिसके बाद तू एक पास फाइंड कर सके जहां पे नैनी खुला हो. बर्बेटॉफ एयर से निकाली बॉल, प्लकिंग इट आउट ऑफ द एयर एंड देन फाइंडिंग नैनी, दैट्स द सेकंड स्टेप. ये करने से और एक चेन पहन के एक फर्स्ट टच सॉकर खेलने से, आई डोंट गिव अ शिट ब्रो, आई डोंट गिव अ शिट. न्यू कॉन्ट्रैक्ट तूने जान अबाउट लिटरली पीएसजी, अगर हम पीएसजी के डर में तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, देन यूनाइटेड इज फक्ड एनीवेज. आई नो वी आर फक्ड, बट दिस इज डीपर देन आई थॉट, बिकॉज इफ पीएसजी के दम पे हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ रहे हैं अपने चाइल्डहुड प्लेयर्स को, then you might as well just shut down the club. So that's what I'm saying, man. I don't care about 30 goal or stuff.
You've got to do it now. बच्चा नहीं है रे तू. In every damn interview you come out and say I am the one. And again he might score a hat trick the next game and people might clip this and say it won't change my opinion of the fact that उसको एक लॉन्ग रेंज मारने से, एक हेडर मारने से, एक फ्री किक मारने से, एक पेनल्टी मार, that won't change. This opinion would happily be changed over a course of a year when he starts seeing someone else than 4 defenders or a Hollywood pass. Same with Bruno भाऊ सिर्फ आपको कमाने नहीं है assist. There are 10 more players. Even Onana can assist. He's that good with his feet. You please give others a chance. I get it, आपको एरन वैन बिसाका अपने लेवल का नहीं लगता, बट उसको हमेशा तब बॉल मत दो जब आपको लग रहा है डेड सिचुएशन है. जब खुली हुई है टीम, यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज टू असिस्ट. सो प्लीज, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू, because you know what, now let me come to Spurs or address these questions first. Imagine this team with Kane. I said it in the pre-match as well. I think Kane ने 30 गोल मार दिए थे. स्पर्स मेरे को याद भी नहीं है कौन सी पोजीशन पे फिनिश की थी. वो कितना ही कर लेता, वो 35 मार देता. मैं कह रहा हूं उसमें मेस्सी और रोनाल्डो का एक साथ भूत चढ़ गया तो उसने 45 गोल मार दिए. 8-10 असिस्ट की जगह उसने 15 असिस्ट कर दिए. मैं एक फैंटेसी फीफा सीजन लगा रहा हूं उसका. क्या हो जाएगा स्पर्स का? कुछ नहीं होगा. व्हेन ही स्कोर्ड 30 गोल्स, हालैंड के 34 पे सबकी सांसें फूल रही है. 34, 35, 36 जितने भी मारे उसने सिटी के लिए. इसके 30 में वो जो शिट स्पर्स है, when people are not recognizing that, तो 30 के 35 कर रहे, कुछ नहीं होता स्पर्स का. So I think it's actually better for them in the long term. मैं short termism पे जाऊंगा हमारे बोर्ड की तरह. तो क्या समीर 80 मिलियन 31 साल का तो क्या चैंपियंस लीग 4-4, हम हैं एकदम वो फैंकू प्लेयर नहीं होते. राफाएल वरान 4 चैंपियंस लीग, कैसेमीरो 4-5 चैंपियंस लीग, 2 चैंपियंस लीग. पेपर पे हमारे पास 15 चैंपियंस लीग है, तुम्हारी टीम के पास 1. और स्कोर क्या है फील्ड पे? 3, दूसरी टीम 3-0. रिस्पेक्ट बोलते रह जाते हैं हम हमारा प्रीवियस मैनेजर दोनों. रिस्पेक्ट हमारे नॉइजी नेबर्स ही है, हमारे लिवरपूल ही है. लिवरपूल शिटवारपूल काइसेडो ने कर दिया. अरे हम सड़ चुके हैं भाई. वी आर रॉटिंग. आर यू नो व्हाट, ब्लेम तो जाना ही है. Blame, the ultimate blame goes upstairs for sure, but you can't keep getting away with it. You signed an hefty overpaying for a striker. You did. आपने मेसन माउंट खरीदा, probably, I don't know, मुझे बख्श देना अगर मैं कोई भूल रहा हूं, but I'd say top 2-3 English talents in the league who was out for a sale. Mason Mount, you got him, and then we signed one keeper which we wanted to by replacing our legend, by disrespectingly letting him go. We did that. You got everything you wanted. You want 3-4 more, but wait for it. As I said, you are at United. If you get everything you want, then you are not at United, right? तो फिर तूने कोई बड़ा काम नहीं किया. Ten Hag, if you get everything you want, because then you might as well be at an Arsenal or a City or a Liverpool. Liverpool का तो वैसे players मना कर रहे हैं, but any other competent club. You signed for this knowing कि हम एक competent club नहीं है. So तुझे 3 मिल गए, and I won't even call it a bad transfer window. We have decently cleared out the deadwood as well. So this is no excuse for this performance. You have had players throughout the World Cup break, some of these fringe players with which you could have played, and you played them and stuff. You have had the pre-season now. काफी समय हो गया है. As I said, किसी को लगता है वो मुझसे क्या अगर ढंग का बेहतर फुटबॉल देख सकता है, because I believe मैं फुटबॉल decent देख पाता हूँ. मैं इतना ज्यादा dissect नहीं कर पाता to a level which I would believe. बट अगर किसी को लगता है और ज्यादा डाइसेक्ट कर सकता है और आई एम मिसिंग अ पॉइंट, मुझे प्लीज बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक आई एम मिसिंग. क्या तुम्हें कुछ पिछले सीजन के एटलीस्ट 50% ऑफ आवर विक्ट्रीज में, बीट आवर होम गेम्स, अभी तो वैसे भी हम जीते ही नहीं, बीट आवर होम गेम्स अवे, और उससे याद आया मुझे, आई वाज जस्ट फिनिशिंग इट, बीट आवर होम गेम्स और अवे गेम्स. खैर अवे गेम्स जीते नहीं, एज आई सेड. अगर किसी को लगता है कि कोई स्टाइल ऑफ प्ले दिख रहा है तुम्हें, कंसिडर द प्री सीजन, 50% of our victories last season and these 2 games. कुछ भी अगर तुम्हें ऐसे पनाता हुआ भी लग रहा है, please let me know in the chat. I'd happily love to see it. By the way, this was our record. एक सेकंड मुझे ये चीज हटाने दो. There you go. 28 goals conceded, 7 defeats, 1 draw. शर्म जिसे कहते हैं. Now we have gone on and lost our first one against another top 8 side, I'd say. Trust me when I say this, it would take a miracle for these lot to finish in the top 5. It would take a freaking miracle, and I'm saying top 5, not even top 4. That is how.
You know how open they were. You know how piss poor we were in our passing from minute one, but we still managed to get so many chances. They just had the willingness. इनके पास बस एक willingness थी to do way more than us, to do way more than us, way more than us. I came in here to also rate our players, to also rank our players and give them a rating. I thought मैं 30 मिनट आऊंगा before the game and I'd speak. I would either we lose, we draw, or we win. I'd still be in an okay mood. Even if we lose, I thought कि हम 2-1 या even 1-0 या 2-0 भी, it will still be a better performance than the last one because हमें एक चांटा मिला था. बट नहीं, उस चांटे का क्या फायदा जिसमें आपको 3 पॉइंट मिल जाए, बिकॉज वो चांटा फिर दिमाग पे नहीं लगता, उसकी पेन बस 2 सेकंड के लिए होती है एंड देन यू डोंट फील इट एनीमोर. एंड दैट वाज द सीन विद अस because apparently it's the points that matter and not the performances. You can take that opinion right up somewhere because I don't believe that for once over the long term. Some people saying this, I'd say F off. Don't even have the balls to judge our result on this. Don't even have the balls to judge our result on this. अगर तुम्हें फिर मैं तो बहुत अंदर से खुशी है मुझे. I am a very interesting mix of emotions right now. I am extremely buzzed. मैं अंदर से सोच रहा था मजा आ रहा है, हार रहे हैं हम, मजा आ रहा है because this is what we deserve. If we somehow sneak the point or 3 points, आपने टट्टी पे सोने 24 कैरेट के सोने की प्लेटिंग कर दी. 24 कैरेट टट्टी पे एकदम सिंपल बुलशिट पे, just gold plated it. I wouldn't want that. It's a message to the board. It's a message to Tucklu Eisenberg. It's a message to all the players that this is shit. You are going to get your ass whipped left, right and center. Center से तो बहुत अच्छे से हो ही रहा है because of the big Bermuda triangle and overused underwear जो हमारा midfield है with holes bigger than that, जो गड्ढे मिलते हैं मून पे उससे बड़े होल्स. इतनी बकवास midfield spread out wide as if Spurs were playing on a smaller field and we were playing in a Super Bowl into 10 का arena. ऐसा लग रहा था we were playing in a different arena. We crowded out. We were the best of both worlds. सुना है? I'll tell you a new phrase. Worst of both worlds. जहां पर बॉल होती थी we used to overcrowd that area. Spurs के पास जहां पे बॉल होती थी we used to overcrowd that area, not win the ball, not pressurize them. एक तो crowd से भी कुछ नहीं हुआ and then also leave the other flank absolutely vulnerable. And वो सीधा पास करते थे and we used to be cut like ऐसे मक्खन, देखिए मक्खन and गरम knife सीधा like slicing through like मक्खन, you know, मक्खन एकदम hot knife through butter जिसे कहते हैं. That was us for the whole, I don't know, 98 plus 3, 101 minutes. 101 मिनट भाई साहब, 101 मिनट हमने टट्टी पे लिया इस गेम में. It wasn't even 90 minutes, for fuck's sake. I think Mojasor is here. I think ETH should stick to his last season's formation. Mojasor, that is what I'm saying. It's not an excuse for Ten Hag. I'm not Ten Hag anti a coach. It's not an excuse for Ten Hag to say, it's like me, you know. जब मुझे खाना मिलेगा, जब मेरा पानी यहाँ पे पड़ा होगा, जब मेरे पापा मेरे लिए नया पेन लाएंगे, जब मेरे पास नई कॉपी होगी, जब मेरे नोट्स मुझे दोस्त मेरे व्हाट्सएप में पीडीएफ बना के सेंड करेंगे, मैं तब पढ़ाई शुरू करूंगा. That's not how you do it, right? That's not how you do it. You have an exam tomorrow, you fucking study. Whatever you do, you fucking study. And you study well. You don't study just to pass. You study to fucking score well. And that is what you do. So, you know what? वो जो फॉर्मेशन खेलनी है खेले, मुझे एक इतना 0.5% स्टाइल ऑफ प्ले दिखाए और मुझे उसके साथ रिजल्ट्स दे. मुझे ना आइसोलेशन में रिजल्ट्स चाहिए, ना मुझे आइसोलेशन में परफॉर्मेंस चाहिए. मुझे फॉर फक सेक एक सीजन एक मिक्सचर ऑफ बोथ, एक यूनियन, यिंग और यांग एक साथ चाहिए. I want the grey, black, white अलग अलग नहीं. I want the grey for once, for fuck's sake, man. You know, absolutely, he's trying to build a skyscraper with sand. But जब तक हमारे पास सैंड है, सैंड कैसल बना मेरी जान, सैंड कैसल बना. तू सैंड कैसल तो बना अच्छा बाकी 6 क्लब से. You somehow start. You don't wait. As I said, तुम कॉपी, पेन, नोट्स, चाय, स्नैक्स और इस सब का इंतजार नहीं करोगे पढ़ने के लिए. You fucking study with the notes and the pen you've got, and then in the process you tell someone in your house, make me a cup of tea, and then you get that as your mid padhai ka break. You don't say, because we have overpaid for almost every signing he wanted. Yes, see, the overpaying part I'm not attesting to Eric Ten Hag. That's आधा season bullshit of Edward Woodward, then Richard Arnold, उसकी चड्डी बड्डी गैंग, उसकी बैंकर की गैंग,
कोटक महिंद्रा जो एक साथ घुस के हमारे क्लब को लूट रहा है, वो सब की गैंग, देन टकलू भाइयों की गैंग, ग्लेजर्स, ग्रीन एंड गोल्ड वाली गैंग, वो पूरी गैंग, आई एम ब्लेमिंग द ओवरपेइंग पार्ट ऑन देम, बट द फैक्ट दैट वी आर विलिंग टू ओवरपे फॉर हिम, 100 पता नहीं कितने मिलियन फॉर एंटनी, 80 million for Casemiro. Yes, we fucked up Frankie de Jong, but we got Casemiro. We got Casemiro. And I think it was a shit decision in terms of not to bring Casemiro, but just to think कि तुमने Casemiro लाया और तुम्हारे 7 जन्मों के पाप मिट गए. You know what? And then he wants Højlund. The talks start with 35-40 and Atlanta say 60. We end up paying them, I don't know, मुझे euro, pound, dollar इसके लिए मारना मत. 72 था जितना मुझे पता है. वो क्या था वो मुझे याद नहीं है ढंग से. Then we go in. ठीक है, Mason Mount. He wants to leave Chelsea. He wants to come to United. He has 1 year left on his contract. We still end up overpaying. Why? Because Ten Hag wanted him, right? Licha Martinez. Whatever his price was, I think we underpaid for him. But जो उसका price quote हो रहा था 25, 30, 35. I think we paid somewhere around 40 या कुछ. I could be wrong. But this is me saying कि उसको मिला. And we have had Jose Mourinho who came second with Jones bhai and Smalling bhai at centre back. And then उसका season was Fred, Diogo Dallo शायद, या वो भी नहीं था, और ली ग्रांट, if I'm not wrong. That was his transfer window. So remember जब उसने टेन हाग लिखा होगा यूनाइटेड वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, he would have known because competent club है तो तू कोई बड़ा काम नहीं करेगा मैं वापस लाके. It's your job to do that. It's still your job to do that. But you signed by knowing, by the virtue of you knowing कि you would have a shit house. And hand on, but touch wood, and hand on my head, you have had a way better way than some of the previous managers. Van Gaal and Mourinho in particular. पहले सीजन सबको बैक कर देते हैं, but then it's game over. But I don't think that has happened with you, and we have seen a trend. हम Champions League में आते हैं, we don't spend shit, but this time we have done that. If we don't get 2 more players in the next 11 days, and if the Glazers don't sell, I believe ETH. See, ETH will be gone by December or not. That's a big debate. That's a big claim. That's a war. But ETH will be gone, won't be gone. Eventually, he will be gone. December, November, January हो, या अगला सीजन का December, November, January हो, या उसके अगले सीजन का December, January, February, November हो. He will eventually be gone. अगर हम ये mentality रखेंगे, oh, the 3 points is what matters. We have to point blames now. The biggest blame, जिससे पहले मुझे लोग तोड़े, the biggest blame always and forever till the time they fucking sell this club would go to those 2 bastards in that family up there, for sure. But to single, you know, यहाँ पर से तुम्हें टमाटर पड़ रहे हैं और एक मोटा क्रेट एक साथ पड़ गया तो तुम वहां देखे जा रहे हो, that's not going to solve, because यहाँ से भी तुम्हें टमाटर, you go in, you shift your focus for some time. Here you say Ten Hag bad, you say Bruno pagal, you say Onana won't fix the situation, you say Garnacho बच्चे build करके आ, don't start subsea. You come to the coaching staff, Eric Ramsey, fuck you, Van der Vaart, fuck you, McLaren, fuck you. You have to go. You can't just keep blaming them for the on-field performances, because whatever you say, we have had a decent window. I won't call this window a flop or anything. We don't get 2 more players. Well, guess what? हम Amrabat चाह रहे हैं and Benjamin. I don't know what. सीजन में आगे कमी पड़ेगी सेंटर बैक्स की, इस गेम में नहीं थी. टेन हैग के परफेक्ट सेंटर बैक्स चल रहे हैं. He wants Amrabat, but he has gone on and bought Mount. तब तुम कहोगे कि बट सीजन तो bro, there has to be some coherency to what you do. You buy Mount and you buy Eriksen last season, right? ठीक है, Eriksen injury prone है तो उसके लिए Mount आएगा. But then जब तुम Amrabat भी चाहते हो, and I'm not saying कि यही लोग खेलेंगे, but there has to be a fluidity to what we are looking to buy. And then तुम McTominay के 45 मांग रहे हो, and then तब तुम उसे तब भी नहीं लेके आ रहे जब probably it's like if like दुनिया का एक पजल है जिसका लास्ट पीस मैकटोमिने होगा. दुनिया में एक ही पजल होगा, 10 करोड़ में से एक पजल होगा जिसमें हमें फॉर वंस मैकटोमिने जैसे लास्ट पीस की जरूरत होगी. एंड ही वाज सिटिंग देयर अपना लाल जॉन सीना वाला आर्म बैंड पहन के कि 45 मिलियन का हूं मैं, और उसकी जिंदगी का हाईलाइट है, उसका करियर हाईलाइट है कि हमने उसके 45, आई डोंट नो क्या फूक के बैठे थे कि हमने उसका 45 मिलियन मांगे. But if we are wanting and asking that, we don't trust him to actually solidify a defense, because I refuse to believe, and I've said this 10 times, but I'm going to say it for the 11th. I refuse to believe कि पूरे हफ्ते कैसेमीरो की तरह खेल रहा है और गेम से 1 घंटा पहले वो ऐसी छोले भटूरे की प्लेट पेलता है कि he can't fucking move for fuck's sake. भाई या तो उसे टट्टी आ रही है तो उसे टट्टी, I don't care.
You are in the training for the whole week. You place McTominay, you bring back Fred from Fenerbahce, Galatasaray, जहां है वो, तो उसे खींच के लाओ से. You buy Amrabat, you place next to, or you tell Mount कि इतने मारूंगा तेरे अगर तू अपनी जगह से. I don't care what you do, but you don't keep that midfield open with a half-assed, half-hearted, grumpy, zang लगा हुआ Casemiro. You don't do that. After last season's start, you shouldn't have the balls. You shouldn't have the chord, the attitude, the act to go into an away stadium with the last season's record too, the act, the sheer audacity, and last game to be going into this game. Because if you do go into a game as a manager like this, then you better make sure you have and your team has fucking delivered in the exact ways you wanted it to, because it hasn't. And you will be criticized big time. We absolutely overperformed last season, overachieved last season, but this season the stakes are way higher. I would have, you know what, you could call me a loser with a loser mentality. I would have taken 2 losses with 2 magnificent performances. Because I said, although I like a mission of them both, I would want perfect football or good football with results as a union, yin and yang, जो मैंने बोला. But right now, I have starved as a Manchester United fan. Like, I think the closest we have gone to decent football is that run post-COVID. वो भी हम लोग counter attack पे खेल रहे थे after game 3, but we kept winning. Apart from that, I, as a Manchester United fan, have starved to identify my team. You know what? I can identify what the tactics are. This guy's going to overlap. This guy's going to tuck. Last game, Shaw apparently tucked. Where was the tuck now? Where was the tuck now? मुझे नहीं दिखा. Am I missing something? मैं नहीं कह रहा मैं टेनाक से शाना हूं. मैं नहीं कह रहा मैं तुम लोग से शाना हूं. I am just saying मुझे नहीं दिखा. Bruno and Mount were playing an equal role in the last game. इस बार मुझे नहीं दिखा. इस बार Bruno was Hero Hiralal Bruno, Rose of Titanic Bruno, Jack of Titanic, Jack Rose नहीं, Jack of Titanic की Titanic में 10 लोग डूबे, 20 डूबे, 100 डूबे, 150 डूबे, बचाऊंगा तो मैं. Same way, he was the only one who was looking to assist. Garnacho shit last game. Very evident that he's not ready to start. At least 2-3 openings for him when he could have gone on and maybe hit it first time or passed it first time or passed it a bit faster. But Garnacho being Garnacho for now, didn't do either one of these. So where do you go into this game? Now I'll go on and rant. I think agla game bhi aa jayega United ka, and I won't stop because I am just fed up with the degradation of the expectation of our fans. You know, there's this meme. I recently saw it about MBA colleges, and this is as United fans. I absolutely related it to it. You know, when an MBA aspirant comes in, he's like, "Bhai, MBA करेंगे तो IIM से ही करेंगे, Bangalore से ही करेंगे, APC से ही करेंगे, न्यू IIM से कर लेंगे." अरे नहीं, बाकी IIMs के अच्छे भी कॉलेजेस होते हैं, IIMs के बिना भी अच्छे कॉलेज होते हैं. अरे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेंगे. अरे एमिटी में भी अच्छा IIM होता है. अरे MBA है ना, वो तो डिस्टेंस लर्निंग. See, that is how the degradation of our opinions and our expectations have gone. You know, हम अच्छा खेलेंगे, हम ये साइनिंग करेंगे, हम अरे कोई बात नहीं अगले सीजन कर लेंगे, अरे इसको टाइम दो, अरे ये तो न्यू सीजन है, अरे ये तो न्यू साइनिंग है, अरे ये तो अवे ग्राउंड है, अरे ये तो न्यू मैनेजर बूस्ट है, अरे ये तो अभी इसका पहला अरे डेब्यू है, अरे डोंट बी नेगेटिव, अरे लेट्स जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स, अरे पॉइंट्स नहीं आए तो क्या हुआ, अभी तो नया सीजन है, अरे डोंट फॉरगेट टेन हैव ओवर अचीव्ड, अरे हम तो रेलेगेशन फाइट में, अरे 15 साल हो गए बिना लीग टाइटल के रे. But guess what? Sir Alex ने तो हमें जिताया था ना. We'll be stuck in that forever. Because trust me, we won't get that external pain. I pray to God. I fucking pray to God. Hey भगवान, उस साल आप लिवरपूल को क्वाड्रुपल जिता देते. उस साल, you know what? The devil in me, the गंदा इंसान in me almost wanted them to win. ये सिटी एक और भी जीतेगी ना ट्रेबल. ये ट्रेबल का ट्रिपलेट करेगी ना. नहीं फर्क पड़ेगा बिकॉज ट्रेबल के बाद इसका टकलू आ रहा है, कह रहा है प्लीज न्यूकासल के अगेंस्ट हमारे फैंस 65,000 में प्लीज 55,000 भर लेना एटलीस्ट, बिकॉज दैट्स द लेवल ऑफ देयर क्लब. Some clubs will never be relevant. Maybe they will be in the year 2045. Either till then they would have won fuck all and we would have been in the drain, or we would be relevant and they'd be irrelevant. But अगर वो 2045 तक का हम वेट करते गए, so the way they are moving, because we will not feel the pain. Trust me, it won't get better than this. As a Manchester United fan, City won the treble.
Recently, Liverpool won their Premier League. I'm not sure are we equal or are we one more, but I think Liverpool either has one more. No, Liverpool either has one more or equal the total number of trophies in England. I think it's that. हमारा थ्री-पीट हो गया, चैंपियंस लीग जीत गया, ट्रेबल जीत गया. It won't get better as a Manchester United fan. हम कोका कोला कैराबाओ मिकी माउस कप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लीग कप कैराबाओ कप मिकी माउस कप कोका कोला, हम that is what we are doing. It won't get better than this as a Manchester United fan. Trust me. Glazers नहीं जाने वाले कहीं से. ग्रीनवुड आ रहा था वापस, हम जश्न मना रहे थे. नील कस्टिस और पता नहीं कौन से वोक किस्म के लोग ही हैं जिनको अपेरेंटली दिक्कत हो गई कि नहीं 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 हमारा क्लब तो टॉप पे चल रहा है, ग्रीनवुड आएगा तो दिक्कत ही होगी. इसने ना बहुत बुरा किया है. वही जो वीवा रोनाल्डो करते रहते हैं वही लोग आज ग्रीनवुड के बारे में वो कर रहे हैं. When the partner who had the problem, the guy who did the problem, and now they have a kid. They are married, they are dating, they are living together. अरे तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्यों हड्डी बन रहे हो इस क्लब पे, उस ऑलरेडी हड्डी का चड्डी हो रखा है इस क्लब का. Just shut your fucking mouth and stay the fuck away, because we don't have a heft of Anthony Martial को लाना पड़ रहा है हमें as a striker, and you're really telling me that wow कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास स्ट्राइकर्स एंड बहुत ज्यादा हमारे पास भरमार है. So come on. I mean, I am absolutely yes. मैं रुक रहा हूं. I'm not going, but let's come out. जो भी है चैट में, जो भी people are listening, पता नहीं कैसे सुन रहे हो मुझे पिछले पौने घंटे से, but all I'm going to say is let's do the ratings now. Let's give them all. Let's give all of these incompetent people a 0. But no, for real, let's rate them because this is going to be a thing now. By the way, for me to भाई पानी भी खत्म हो गया, पानी ने भी साथ छोड़ दिया. But no. As I said, man, this is going to be a daily thing now. Daily as in जब game होगा, so do look out for that. देखो चैंपियंस लीग में मैं 3:30 बजे इस परफॉर्मेंस के बाद नहीं आऊंगा लाइव, but any time a decent 12 बजे 12:30 तक गेम खत्म हो रहा है, I'll be live for you guys. I'll be live to interact with you guys, and we can have a chat here, and we're going to do this match rating, and hopefully 20-25-30 मिनट में हम एंड कर पाएंगे, because it will be a victory the next time I come on. Because you know what, I was absolutely livid, and it's not about the result more, it's about the performance, the audacity to go into a game like this, even to Ten Hag, man. Ten Hag, I wish he was watching कि भैया क्या कर रहे हो. Ten Hag once said eras come to an end, looks like it was ना यार सुधांशु भाई ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो. एक यही इस डायलॉग पे 1.5 करोड़ रील्स और 1.5 लाख यूट्यूब वीडियोस बने. अगर तुम ये डायलॉग मैन यूनाइटेड फैन से छीलो, वो नहीं था वो कि आप हमसे हमारी जान मांग लेते, बट आपने हमसे हमारा अधिकार है जो भी वो कैसे छीन लिया. ये मत छीनो. एरास कम टू एन एंड. अभी तो हमें चलानी है, अभी तो हम मिक्की माउस कप फिर जीतेंगे. एरास कम टू एन एंड. एरास कम टू एन एंड के बच्चों, वहां ट्रेबल जीत गई मैनचेस्टर सिटी और एरास कम टू एन एंड. 13 भाई बिल्कुल स्टीव मैक्लेरन को लेके इस बार तो या तो वो वेंटिलेटर पे जाएगा या तो हम अगले गेम में भागने लगेंगे. मैक्लेरन भाई को भगाओ 13 किलोमीटर, या तो वो भाव मैक्स हॉस्पिटल होगा, या तो भाई ये हम लोग नेक्स्ट गेम से बढ़िया खेलेंगे. बट स्टार्टिंग विद ओनाना, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा टॉटनहम हॉटस्पर्स, दे वर बैंग एवरेज टू बी ऑनेस्ट. वी मेड देम लुक लाइक प्राइम फकिंग बार्सिलोना, प्राइम फकिंग. इट वाज लाइक हम वर्डर ब्रेमेन है, वो लोग बायर्न म्यूनिख है, ऐसा खेल रहे थे हम लोग सेकंड हाफ में. बट ट्रस्ट मी, दे वर बैंग एवरेज. मैडिसन इतना घू गेम, इतना टट्टी गेम था मैडिसन का, बट वी मेड हिम लुक सो गुड स्पेशली इन द सेकंड हाफ. सॉन, रिचार्लिसन, bakwas. Pedro Porro, that one shot he had and that burst of energy, that is what Pedro Porro is. Pedro Porro is Aaron Van Bissaka का विकसित रूप. जैसे पिकाचू का राइचू वगैरह होता है ना, I don't see much all of that, but मुझे पता है पिकाचू का he's that for me. Adventurous है, but उस adventure के बाद वो क्लिफ से नीचे ही जाता है. That is Pedro Porro in a nutshell. Same with Emerson Royal. Trust me, they ain't gonna go anywhere. Spurs जिनको भी लग रहा है अगर कोई राइवल फैन भी देखा है, कोई स्पर्स फैन, मुझे तो लगता नहीं देखेगा ये वाली वीडियो. पता नहीं कितने ही होते हैं स्पर्स फैंस, बट अगर हो भी कोई, ट्रस्ट मी, टॉप 5 में आ गए, मिरेकल है. अगर कोई मुझसे बेट लगाएगा 1000 रुपए की, अगर मैं जीता मुझे 500 ही दे देना, मैं तुम्हें 1000 दे दूंगा अगर वो टॉप 5 आ गई, कोई बेट लगाना चाहे मुझसे. बट या, दे वर बैंग एवरेज, वी मेड देम लुक टू गुड. पोस्टकोग्लू भी इतना खुश नहीं होता क्योंकि वन एक तो दिखाता नहीं है ज्यादा, चौड़ में तो घूम रहा था, बट टू इट वाज मोर अबाउट कि यू नो, उसे भी पता था दे वर नॉट दैट गुड. वी स्ट्रक द पोस्ट एज वेल. They struck the post, I think, twice, I guess. And we struck the post, I guess, once. Rashford ने a couple of, I'd say 70% ish वाले chances या 0.6 xg ऐसे type
0.75 तो पेनल्टी की होती है, so I'd say 0.4, 0.5 XG वाले chances मिस कर दिया obviously because last season थोड़ी है 30 गोल कैसे मार देगा फिर से, but more than that Bruno, as I said, for the nth time savior बनना था उसे United का, he couldn't save us for shit, he fucking put us in the water. Iceberg जो थोड़ा सा टकराया था ना टाइटैनिक से, he made sure वो iceberg सीधा टाइटैनिक पे फेंक दे, because you know what, it's not helpful if you try to force things, sometimes just let them be, bro. Let them be. As I said, Onana भी बॉल खेलता भाई, अब तो Onana भी assist दे सकता है, you can take a rest, man. And yeah, they were bang average. They were absolutely bang average. Christian Romero looked decent. I mean, decent. Mickey Mouse को हमने टेस्ट ही नहीं किया है. I had hoped. सही है. I had hoped कि Mickey Mouse को हम थोड़ा टेस्ट करेंगे, we didn't. हमने डेस्टिनी उड़ोगी की डेस्टिनी बना दी. I thought हम उसकी उड़ा देंगे डेस्टिनी, but we didn't. So it was that. But if I start with Onana, I'll give him a decent. 2-4 बार पाँव चलाए, made me remember, made me sort of nostalgic about De Gea कि वो proper classy foot saves. So I'd give him 6.5, because if 6 is average, 6.5. वो बेचारा अपनी Van Bissaka 4. I don't want to talk about it in Van Bissaka 4 because this is what I said in the review and I don't want to be repetitive. I'll say this in the review to this game, which will come out tomorrow morning as well, which will be not a rant but a much structured video, trust me. And I'm sorry for the rant, but yeah, Casemiro 3. मैं Casemiro out of place ले रहा हूँ, but 2. Casemiro 2. गाली दो मुझे, but Casemiro 2. Casemiro 2. Casemiro fans in the chat, Mount को blame करना बंद करो. Mount का blame would go to Eric Ten Hag and the management. And Mount ka attacking blame you can give to Mount if he was wasteful in the possession, all the progression, but you can't give him the defensive work because one, उसकी अगर वो job है, then the manager has to make sure कि new player उसको एक new job में दे रहे हैं, so he should perform. 1 and 2, I just think that he isn't meant to do that. He isn't meant to do that. So Casemiro 2, I'll go with the centre backs. Rafael Varane 2 rigid, laggy on the ball. 4 Martinez 4 again 2 rigid 2 laggy. 45 सेकंड नहीं ले होते मार्टिनेज हर बार बॉल पे, हर बार एक आपको एक अगर वही पास बनाना है आपको कि जिसमें आप ऐसे अपनी बॉडी खोल के शॉट को दे रहे हो तो 45 सेकंड मत लो उसके लिए, किसको पागल बना रहे हो, ऑपोजिशन स्टेडियम फैंस पूरी धरती को पता है तुम वही पास करने वाले हो, so that's a 4 for him as well. Aaron Wan-Bissaka, as I said, 3 maybe 2 3 but okay, पता नहीं 4 whatever. Diogo Dalot 5 6, I'd say average. He was decent when he came on. So that's that. Casemiro, as I said, 2. Bruno 2.5 क्योंकि एक पास था शायद तूने ज्यादा सही दे दिया होगा Casemiro से 2.5. I'd say Mount 4 because he actually was better than those two. Garnacho 2.5 again, wasteful, shitty, not creative, not resourceful, not materializing anything. Shit, absolute shit. I don't care. बच्चा है तो अभी मत खिलाओ फिर. भाई हम लोग वेस्ट हैम नहीं है यार, हम लोग वेस्ट ब्रॉम नहीं है कि बच्चा है ना चलो ना ठीक है एक गेम, वी हैव टू विन एवरी गेम फॉर फक सेक. तो टाइटल कंटेंडर तो बनो, टाइटल मत जीतो, जनवरी में जाओ तो वी माइट विन द टाइटल एंड नॉट बाय यू नो व्हेन वी आर 9 पॉइंट्स और ड्रिफ्ट और 6 पॉइंट्स. एटलीस्ट नेक टू नेक रहे नवंबर तक, अक्टूबर तक, तो कुछ तो वो हो. It's not give a बच्चा, give him time. तो give him time on the bench. No, कोई मना नहीं कर रहा. Give him time on the bench. That's a 2.5. Anthony is still looking better than last season to me. Ryan Aït-Nouri, as I said in the review of the game and in the preview of this one as well, ऐसे करके वो वाले runs बना रहा है. He's getting in behind. He's making those winger runs. I'm happy about that. I'd give him a 5 for today's performance. I'd give Marcus Rashford a 2 yet again, or maybe a 3. 2 थोड़ा harsh हो जाएगा because he was decent in his runs. जो एक दो बार उसे through हुआ, I think he was decent in his runs, so I'd give him a 3. To the substitutions, I'd say 4 to Eriksen, negligent, non-compatible लगा, laggy लगा वो भी, not the Eriksen. पता नहीं उसे उसकी इंजरी के बाद एंडी कैरोल वही था ना, चूतिया एंडी कैरोल पिटेगा मेरे से, उसी ने करी थी ना इंजरी, गधा इब्राहिमोविच का छोटा ताऊ. But anyways, 4 whoever came on, who came on उसके बाद Sancho 5 4.5 I'd say 4.5 to Sancho. स्लो मोशन में ड्रिबलिंग करता है हर बार, वो स्ट्रीट पाना यो जोगा बोनीतो स्टाइल नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए. एक शोल्डर फेंट कर काट रहा नहीं है तो पास कर, नहीं चाहिए तेरे पाने. अच्छा खासा भैंस की आंख ब्रेक हो रहा होता है पाने के चक्कर में, थ्रो इन चली आती है
उनके पेड्रो पोरो और बाकी 10 का झुंड पीछे पहुंच जाता है. What the fuck do I do with your panas? I don't want those panas. तो क्या है? Oof, Richarlison was so shit today. I'm just livid with the fact that they were so bang average, but we fucked it up. We fucked it up big time. A message to all the people who see this post stream as well. It'll be a request. Ticker चला ही देता हूँ for you guys. It'll be a request. गला खराब कर दिया मैंने. If you guys hope कि ये rant कभी ना देखनी पड़े. Hope. Subscribe to the goddamn channel so that कुछ तो खुशी मिले इस दिन में. I'm just so sad. I'm just so sad because of the fact that yeah, man, it's another season and we all are हमारी पूरी gang, our whole, I talked to these people on the WhatsApp group. Everyone was so pumped about this season. Maybe we get going. Maybe this is the season. Maybe Sheikh Yasin comes in. Sheikh Yasim comes in. Jasim Yasim. SGR तो नहीं आएगा. SGR ही ला दो. पता नहीं Glazers का क्या scene. SGR but 100%. But anyways, and it's fucked us up again in the ass, isn't it? So I mean, what can I say? It's just sad right now, and I'm pretty sad. I was also happy to be. As I said, I'm in a weird state of emotions right now. Weird fucking state of emotions. I'm happy because we deserve this, and I'm happy that we got what we deserve. अगर फिर हमें 1 पॉइंट 3 पॉइंट मिलते हम फिर वो टट्टी पे सोना लगा के सोचते कि हम बहुत बड़े चाचा चौधरी बन गए. I'm glad that हमें मुंह पे मिला, and it's a shame on us that we fucking messed it up again. But that's that, as I said. But it's a big thank you to everyone who joined in. A big thank you to Bakal Bhai, Mojo Sir, Random, Kushagra Bhai. I've lost my fucking vocal cords to this one. Manish Bhai. Yeah, another sad sort of start to the season. Let's hope to build not on this, but to better things and to better performances in the coming games. I don't know how the fuck are we going to play with this style against Brighton, and then we have to travel. Before that, we have to travel to Arsenal as well. They're going to butt fuck us hard. But we hope we do well. But yeah, as I said, as a positive, you can like the video, subscribe to the channel because there'll be a lot more content. There'll be the review of this game, a systematic review without rants. I promise, without rants. I promise. So that'll be that for today. And thank you so much, as I said, to everyone who joined in. This poor performance. Let's see how Newcastle and Man City play now. So thank you so much. Take care. Keep supporting United. I know it's hard, but GGM, you guys. Thank you so much. And I'll speak to you all in a bit.